Dear children, I am going to teach lesson first resources and development in geography. Page number look at the page number 170 land resources. Look at the page number 170 लैंड रिसोर्सेज देखिए आपको उसी के अंतर्गत लैंड रिसोर्सेज है. इट इज़ द लैंड दैट सस्टेन्स अस. वी लिव ऑन लैंड. वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड. वी मेक यूज ऑफ इट इन डिफरेंट वेज. लैंड जो हमारा भूमि है वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है. हम इसी पर रहते हैं, सारी दैनिक क्रियाएँ करते हैं और अपने दैनिक क्रियाओं के साथ साथ अपने जीवन यापन करने के लिए सभी क्रियाकलाप भी करते हैं, सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अपनाते हैं. इन दिस वे लैंड इज नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एटमोस्ट इम्पॉर्टेंस. इट सपोर्ट द नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, transport and communication system. However, and land is of finite magnitude. As such, it is important to us the valuable land for various purposes with careful planning. Land variety of feature. India has land under a variety of relief feature. These are mountain, plateau, plains and island. Classification किया गया है. About 43% of land area is plain, which provide facilities for agriculture and industry. Mountains account for 30% of total surface area of the country. They ensure perennial flow of some rivers, provide facilities for tourism and ecological aspect. Third, about 27% of the area of the country is the plateau region. It possesses rich reserves of minerals, fossil fuel and forest. Utilization of land, आपको बताया था, द लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पज. फर्स्ट, फॉरेस्ट लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन. दिस इज टू काइंड्स, बारेन लैंड और नॉन एग्रीकल्चर. बारेन एंड वेस्ट लैंड. सेकेंड है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज लाइक बिल्डिंग, रोड्स, फैक्ट्रीज. थर्ड, अनकल्टिवेटेड लैंड, परमानेंट पॉस्चर एंड ग्रेजिंग. Second, land under the miscellaneous tree crops grows. Third है cultural wastelands. Fallow lands. These are two types, current fallow and other than current fallow. Current fallow left without cultivation for one or less than one agriculture year. अदर में है लेफ्ट कल्टीवेशन फॉर पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर्स. नेट सोन एरिया इज द एरिया दैट इज सोन वंस इन अ ईयर. द एरिया दैट इज सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर. प्लस एंड नेट सोन एरिया is known as grass crop area. Now, land use pattern in India. On the basis of land use pattern, the land is classified as under pasture land, net zone area, forest area, waste land और लास्ट है एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर. pasture land में the land under the permanent pasture is too low and is further decreasing. However, we are still managing
the cattle population in India by preparing fodder for them. Net sown area, it is about 46% of the land in India. It includes the current flow and land in which the cost of cultivation is high due to its poor quality. The pattern of net sown area differs from region to region. It is about 80% of the total area in Punjab and Haryana, while less than 10% in Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur and Andaman and Nicobar Islands. Forest area, it is far lower than the desired 23% of the geographical area. Forest area is considered essential for maintenance of ecological balance. Wasteland, it includes rocky, wasteland में rocky, arid, desert areas and land put to non-agriculture use like settlement, roads, railway, industry, etc. Area under the non-agriculture, it includes the area covered by building, roads, rail lines, rivers, canals, industry, etc. Land degradation, 95% of our basic needs for food, shelter and clothing are fulfilled from air that we get from land. But human activities have degraded lands. Besides, these activities have increased the pace of damage to land caused by natural forces. Wastelands are degraded lands which do not fulfill their life sustenance potential. The degraded land includes rocky, arid and desert area and land put to non-agriculture use such as settlements, roads, railways, industry, etc. At present, India has about 130 million hectares of wasteland. The wasteland comprises as under 28% forest degraded area, 56% water eroded area, 10% wind eroded area, for the rest of 6% affected by saline and alkali deposits. Cause of land degradation, man-made factors or natural factor. Man-made factor में factors such as deforestation, overgrazing and expansion of mining and quarrying operation have contributed to land degradation. Second में natural factors में the natural factors are wind and water. They have caused erosion of topsoil. Topsoil में first second mining causes deep scare and trash of overburdening when excavation of minerals is completed. Second में mineral process like grinding of limestone for cement industry and calcite and soapstones for ceramic industry generates large amount of dust. The dust ultimately settles down on the land and retards water infiltration into the soil. Industrial influence and waste have caused land and water pollution in many areas. Areas in cause of land degradation cause है mining and quarrying, overgrazing, waterlogging due to irrigation, industrialization. इसके कारण आपका एरिया का डिग्रेडेशन होता है. मेजर टू सॉल्व द लैंड डिग्रेडेशन प्रॉब्लम, अब इन्हें कैसे डिग्रेडेशन को कम किया जाए. टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन द देमसेल्फ गिवन ब्लो कैन बी एम्प्लॉयड.
फर्स्ट है प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ ट्रीज इन एरिड एरियाज। सेकंड, कंट्रोल ओवर माइनिंग एक्टिविटीज़। थर्ड, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट। फोर्थ, establishment of sand dunes by growing thorny bushes। फिफ्थ है कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग। सिक्स है अफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड्स। सेवेंथ है वेस्ट लैंड मैनेजमेंट। सॉइल एज अ रिसोर्सेज। ये नेक्स्ट डे सॉइल रिसोर्सेज के बारे में नेक्स्ट बढ़ाएंगे। थैंक यू।